एक्सक्यूज मी, आप मैं जब बोलूँ तो आप मूव कर देना स्लाइड को, ठीक है? ओके, दिस ठीक है। सर स्टार्ट करूँ? ओके, okay. Hi, good morning everyone. So today we are going to start, the topic is buyback of shares. So now please next slide. Now, buyback of shares, that means if there is a company, we all know that in last class you have seen the paired up capital, share capital, what is that? You have seen what is the preference share capital, you have seen debentures, you all know that, right? Now, so right today we are going to talk about the buyback of shares. Shares means there is a one public company or listed company, that means उनके shares हैं market के अंदर already. Right now company क्या plan करती है? They are going to buy back their own shares from the market at the discount or something. So जब करते कब हैं buyback of shares? There is, did you get the point? What is the buyback of shares? Buyback of shares, it means अगर आपने कभी shares अपने float किए हुए हैं, आपने आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, आपके ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, बट इन फ्यूचर एट जब आपको लगता है कि राइट नाउ जो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है दैट इज बिलो योर less than your face value of the share, so that point of time you can say that is the market condition. At that point of time you can plan for the buyback of shares from the market. So this is what buyback of shares here. Now a buyback of shares, I was telling about buyback of share means the repurchase of its own shares by the company. Now first thing is we got to know that market condition, जब आपको लगता है कि market price is lesser than your face value something, right? Now that means you right now you are able to buy your share at discount. You suppose, let's say your face value is rupees 10 and right now market price is something, after 2 years or 3 years down the line, let's say your market price is rupees 7 or 8 something. That means your face value 2 years back or 3 years back your share price was 10 rupees. Right now your market price of share is available at rupees 8 or 7 something. So this is the right time you can buy back of shares. Now अब हम plan क्यों करते हैं? Exactly, there are a lot of reasons behind the buyback of shares. The first thing is, अब हम obvious है, there is 3 years 4 years back we have raised the funds from the market and right now we are planning to buy back of shares. Why? होता क्या है कि suppose आपकी market price go down हो रही है, तो that is the negative thing for the company. So in they really want to focus their core strategies, core products of the company, and for there are a lot of reasons. And then we plan for the buyback of shares. Now buyback of shares में हम करते क्या exactly? We are going to use the surplus of funds and then we are going to buy shares. Suppose let's say I'm the company and right now market price is rupees 8. Suppose आपके पास 100 shares है in this class, you have 100 shares of my company. Now I'm going to pay rupees 8 and that means I have to pay how much money? 800 rupees. So this is what buyback of shares. Buyback of share, it means I'm going to use my reserves. Reserves का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, free reserves की बात कर रहा हूँ. And there are securities premium reserves account वगैरह that we are going to use for the buyback of shares. All are you getting my point? Buyback of shares, it means जो shares float करे हुए हैं, in future I am going to buy that shares from you at the market price, and this is the reason, that is what the buyback of shares here. Now next यहाँ पर बताना मुझे, okay, effect, previous slide, effect of the buyback. देखो अगर यहाँ पर होता है क्या effects of the buyback of shares के अंदर, if I tell you that first thing is we are going to reduce the number of outstanding shares. Outstanding shares, let's say there is one company, reducing in outstanding number of shares. Outstanding number of shares, it means existing number of shares in the market. Yes or no? Existing number of shares in the market. That means here let's say right now number of shares in company is 1 lakh shares, but company plans we are going to buy 50,000 shares in form of buyback here. Buyback right now 50,000 shares is available right now. 50,000 you already bought it and 50,000 shares is available right now after buyback. So 50,000 shares, this is how we are going to reduce the number of shares in the market. Now और second thing यहाँ पर क्या होता है आप लोगों को पता होगा exactly, if we are going to reduce the number of shares in the market, then it is not going to impact on the earnings of the company.
इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स. इट मींस जो कंपनी के अर्निंग है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा. आपने जस्ट शेयर्स फ्लोट किया. राइट नाउ लेट्स से आपकी कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपीस प्रॉफिट. let's say your for this financial year your company profit is 100 crore. now अब आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख. आप इसको डिवाइड करोगे. लेट्स से इसको मैं 10 लाख कर देता हूं. ठीक है, 10 लाख शेयर्स, 100, 10 लाख शेयर्स, इट इज रुपीज 10 समथिंग जो भी आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है अर्निंग पर शेयर. नाउ अब अर्निंग्स इट विल रिमेन सेम. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द बाय बैक ऑफ शेयर्स. डिड यू गेट माय पॉइंट? कंपनी के बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है. आप सेम काइंड ऑफ सेल कर रहे हो, आप सेम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट्स की कर रहे हो, आपका कोई वहां पे चेंजेस नहीं है. जस्ट यू आर डूइंग ए वन टास्क, जिसका मतलब है कि आपके शेयर्स थे एग्जिस्टिंग, उनको आप बाय बैक कर रहे हो. दैट इज सिंपल. It is not going to impact on your earnings of the company. It is not going to impact on the normal operation of your business. इसमें कोई changes नहीं आ रहा. But यहाँ पर आप देखोगे that I was telling you, first thing is we have seen the effect of the buyback is decrease in the number of outstanding shares. पता लग गया. The second thing is अगर हमारी earning, अब देखो यहाँ पर 10 lakh shares है. Let's say मैं 50,000 कर देता हूँ तो ये rupees 20 something हो जाएगा. Did you get my point? By reducing number of shares at the same time your earning per share will increase for the remaining shareholders. Let's say आप में से 50% वाले मैं इधर वाले शेयर्स बाय कर लेता हूँ, 50% इधर. So let's say आपका पर पहले जो 10 rupees was your earning per share because number of shares was more. बहुत ज्यादा थे shares that time. Now I was saying here after buyback right now your earning per share is rupees 20. ये मैंने शेयर्स बाय कर लिया. राइट नाउ आपके पास अर्निंग और ज्यादा अवेलेबल है. डिड यू गेट माय पॉइंट हियर? सो जो मैं बाय बैक की बात कर रहा था, आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीज हो जाएंगे, एट द सेम टाइम योर अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर. दैट मींस नाउ अब आपको पता है व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज योर शेयर्स फ्रॉम द मार्केट और बाय बैक ऑफ योर शेयर्स, देन यू नीड फंड. इट मींस यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर सरप्लस अमाउंट. Yes or no? जब कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट होता है देन दे आर गोइंग टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स. राइट नाउ द सेकंड थिंग यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, इट मींस यू हैव टू पे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, यू नीड टू ट्रांसफर टू whom? द शेयर होल्डर्स. यहाँ पर चेंजेस आना है. इट मींस जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो उससे आपका जो सरप्लसेस है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. जितना भी अमाउंट है 100 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपीस या 1000 करोड़ रुपीस के शेयर आप बाय बैक कर रहे हो, देन इट विल बी रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट ऑफ मनी. डिड यू गेट दैट पॉइंट हियर? समझ आ रहा है यहाँ तक? दीज आर द इफेक्ट्स. नाउ सेकंड थिंग इज हियर, अब और क्या इफेक्ट्स हो सकता है बाय बैक ऑफ शेयर्स के? नाउ फर्स्ट थिंग इज वन मोर पॉइंट. if your share is right now, let's say no one is going to buy your shares in the market and you are the shareholders, let's say you are the company and I'm the shareholder in your जो भी I have already purchased your shares in the IPO और जो भी आपने मार्केट से मैंने बाय करा. right now because of your company's name or goodwill, something because of your business, nobody is going to buy your shares in the market. Now, so as a shareholders, that means I'm facing the problem of liquidity. Liquidity नहीं है मार्केट के अंदर. You have seen जो blue chip companies है या बड़ी companies हैं, Reliance, Tata and Birla and बड़ी बड़ी जितनी भी companies हैं, frequently आप जैसे ही sell करते हो आपको buyer मिल जाता है मार्केट के अंदर. But right now I'm talking about, let's say I'm just taking the one assumption or hypothetical example. Let's say मैं आपका shares, no one is going to buy shares from me. So at that point of time, अब in future में क्या होता है? If you are planning to buy back of shares from the market, that means from me. So then it will be good thing for us. For me, it is good thing ना, because मुझे अब मैं अपना cash sale कर सकता हूँ shares. There is some buyer. वो buyer कौन है? आप खुद हो. Did you get my point here? Buyback of shares का क्या impact होता है? आपके number of outstanding shares कम. The second point is here, your earning per share will increase. Although in nominal amount, your earning will remain the same. There is no change. But earning per share for the shareholders, it will increase. I'm talking about the existing shareholders after buyback जो हम कर रहे हैं उसके बाद. Now there is third point what I told you that बैंक से आपका फंड जो surpluses amount है वो आपका कम हो जाएगा. And fourth thing I talked about what
क्या बताया मैंने आप लोगों को? लिक्विडिटी विल इंक्रीज. So that is, these are the impacts of your buyback of shares. Did you get my point here? बहुत simple था यहाँ तक. Now please next slide. Just a second. Wait. Come. Okay. Is it visible? Okay, fine. Now look at this. Objectives of your buyback of shares here. See, it enables the company to utilize a surplus cash. If now I will tell you why we do this. See, first objectives of buyback of shares here. The first thing is utilize its surplus cash. If company has large amount of the profit that company is earning from last few years, then company can plan for the buyback of shares, because company, suppose let's say their company don't have any further growth opportunities where they are able to invest their own money. वो ऐसा कुछ invest opportunities है नहीं, but right now from few years जो पिछले उनके सालों से they are earning good amount of the profit. Now so large cash है, surplus बहुत अच्छा है, then they can plan for the buyback of shares. So first thing, they can utilize their surplus by buyback of shares. Done. First thing here, did you get my point? अगर आपके पास surplus fund नहीं होगा, reserves नहीं होंगे, then you are not able to do such kind of, you are not able to perform such kind of task. Did you get my point here? Now the second thing is, it would increase the earning per share provided there is fall or reduction in the future profitability here. Can you see it? Say this. I would say same point here. We were talking about the impact of the buyback of shares. Impact of buyback of shares here. Come. So where I was on which point? Second point, right? So generally increase in earning per share provided there is no fall or reduction in the future profitability. What did you get here? See, same again, I would say same point here. We have discussed already in the impact on the buyback of shares. See, your outstanding number of shares will decrease and your earning will remain, let's say, same. Then your earning per share will increase. That's the point. Okay. Now, the third thing is here, it would increase the intrinsic value of share because lesser number of shares have claim on the net assets. Now, what is the point? Intrinsic value, it means true value of the company. That is the point you have seen in your 12th class. Okay, so intrinsic value, how buyback is going to impact on the intrinsic value of the company. Let's say I'm talking about intrinsic value in terms of how you are going to value your company. आप अपनी कंपनी, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एज ए शेयर होल्डर्स, हाउ डू यू सी दैट कंपनी? This would be the right price for this shareholder. Market price, let's say 10 rupees, but you are looking that the intrinsic value, it is more than 10 rupees. So you can say 11 rupees or 12 rupees or 15 rupees something according to you. आप ये कब decide करते हो? Buyback a share is how that is going to help you in this case. Let's see here. अब यहाँ पर increase in the value of share because lesser number of share claim on the net assets. You all know that the shareholder is the ultimate owner of the company. अल्टीमेट ऑनर ऑफ द कंपनी. लेट्स से इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, और जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो रिमेनिंग एसेट्स वगैरह होते हैं, हु इज गोइंग टू क्लेम ऑन दैट? द शेयर होल्डर्स. आफ्टर पेइंग योर इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग योर ऑल फिक्स जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हैं, आपको रीपेमेंट करने के बाद देन रिमेनिंग जो है रेजिडुअल अमाउंट है, दैट इज बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स. अगर आपके पास शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, देन यू आर very positive about the company. Whatever company have, that is belongs to us. आप अपने आप को इस तरीके से बोल सकते हो ना, right? So that is the point here. It with the company's intrinsic value will increase here, and because the lesser number of shares claim on the net assets. Done? Did you get my point here? आप लोग कम हो जाओगे तो आपको पता है यहाँ पर इन केस तो राइट है कि आपके पास ज्यादा अर्निंग्स होगी,
कंपनी के एसेट्स आपकी होंगी वहां पर, बिकॉज वहां पर जो सारे शेयर होल्डर्स है वो कम हो जाएंगे आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स. डिड यू गेट दैट पॉइंट? नाउ there is, it prevents the takeover of the companies by the competitors. One more point. अब पता है competitor ये takeover क्या exactly? See, you have seen there are a lot of cases. Takeover का मतलब होता है कि आपको without informing you, let's say you are the company, without informing you, I'm going to buy your shares, and I'm, let's say 51% shares आपके buy कर लो, then that's how I'm going to control. That is the takeover. डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम ज्यादा हैं, देन इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, मैं शेयर होल्डर्स को अप्रोच कर सकता हूं. आई विल बाय शेयर्स फ्रॉम देम, राइट? एंड दैट इज व्हाट द टेक ओवर. अब नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर आप मार्केट में कम कर दोगे, देन यू कैन reduce this, or you can reduce this threat of what? Takeover from the competitors. Yes or no? Done. So, and one more point, it increase the shareholding of the promoters. आपको पता है there are founders, you have seen the CEO, MDs and all. There are two types of shareholders, you can say 2 or 3 types. Basically there are financial institutions, qualified institutional buyers, जो आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह हो गई, NBFC कंपनीज होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज हो गई. देयर आर सम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास, जिनके पास पैसा है, दे आर गोइंग टू बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक इन द डिफरेंट कंपनीज, राइट? देयर आर लाइक वी ऑल आर द रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज हियर, और आपको पता है 20% 30% स्टेक प्रमोटर्स के पास होता है. प्रमोटर्स इट मींस जिन फाउंडर्स मेंबर वगैरह, जो फैमिलीज बेस्ड बिजनेस एंड ऑल, सो दैट द प्रमोटर्स. अब होता है क्या एग्जैक्टली, इफ यू आर गोइंग टू बाय बायबैक ऑफ शेयर्स मार्केट में, लेट्स से आपकी टोटल शेयर कैपिटल लेट्स से 1 लाख रुपीस है यहाँ पर, 1 लाख, एंड 30% ऑनरशिप है आपकी प्रमोटर्स के पास, 70% ऑनरशिप है मार्केट के अंदर. इट मींस दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर और फ्लोटिंग शेयर्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल है फॉर द बाइंग एंड सेलिंग. जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग. डिड यू गेट माय पॉइंट हियर? जो मार्केट, आई मीन प्रमोटर्स के पास है, वो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते. यू कांट बाय ऑन दी NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, आप वहां पर बाय नहीं कर सकते उन शेयर्स को. दैट शेयर्स आर अवेलेबल व्हिच आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग हियर. सो मैं कम, डोंट आस्क. ओके, नाउ शेयर्स में आपके पूछ रहा था 30% इज प्रमोटर, 70% आप देख सकते हो. कंट्रोल किसके पास है यहाँ पर? मार्केट के पास 70%. नाउ promoters can do one thing here, if they want to influence the company's decisions. If they want to influence the company's decision, they want to control the company. So then they can do one thing. They are going to plan buyback of shares. And let's say they are going to buyback of shares, let's say 40% करते हैं. Remaining, जब ये shares इनके हो जाएंगे, यहाँ पर 70% ownership किसके पास आ जाएगी? Promoters के पास यहाँ पर. Did you get my point here? Yes. Okay, so here it increase the shareholding of the promoters. Now it enables the company to achieve internal reconstruction by making the share capital compatible with the real. I mean sometimes क्या होता है ना, कंपनी की जो मार्केट है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, they are more than the company's capacity and they are not able to control, they are not able to pay the regular dividend. There is no significant change in the market price. I'm talking about significant change, it means significant change positively. आप इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑल. सो बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आप क्या करते हो, सम टाइम टू internal reconstruction by making the share of capital compatible with the real. Now there is the value of the assets through the process of reducing the share capital. Okay, and value of the assets through the process of reducing the share capital. Now there is, it prevents the downward trend or fall in the value of shares. I mean let's say sometimes क्या होता है, buyback of shares, it is a good thing. मैंने आपको, I already told you that what is the right situation for the buyback of shares. जिन कंपनीज की फेस वैल्यू से भी कम मार्केट प्राइस हो, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन प्लान सच काइंड ऑफ थिंग. ओके, बायबैक ऑफ शेयर्स. सो आप उस चीज को, नेगेटिव सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए भी यू कैन डू सच बायबैक ऑफ शेयर्स हियर.
prevents the downward trend or fall in the value of the shares. If there are lesser number of shares, that means कौन shareholder stay करेगा market के अंदर? Those who really want to invest in your company. वही आपके पास स्टे करेंगे, बाकी के वो क्या करेंगे, बायबैक ऑफ शेयर जो भी वहां से मार्केट से एग्जिट कर लेंगे, राइट? सो इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Benefits of buyback. First thing, again, it is repetition here. Company can use its surplus cash. There is no doubt. If you are planning for the buyback of share, then you must have some kind of surplus, without which you can't do such kind of buyback of shares and all, right? Now, it improves the return on capital. That means it will increase your earning per share. That's what I'm talking about here. Return on capital will increase. Did you get my point here? So let's say अगर मैंने वही आपका point बताऊंगा यहाँ पर 20, पहले 10 rupees EPS था, right now it is increased by 20, so that is what, right? और let's say आपका 1000 crore rupees profit है, okay, 1000 crore, और there are number of shareholders is 10 crore. अब आपके number of shareholder let's say 5 crore है, then 100 crore आपका profit है, 1000 crore. So you can see the changes. Your return on capital has improved. Now there is, it enables the company to buy the shares of the retiring employees. Hypothetical, I would not. Let's say there are your majority of shareholders are, the age is around your employees हैं आप लोगों के, खुद ही उन्होंने buy किए हुए shares. So let's say that is around 59 or 60 something. Now they are going to retire. They want to capitalize it. So this is the time where you can जब buyback of shares through आप उनके shares buy कर सकते हो, right? That is what the point is here. So enables the company to buy the shares of the retiring employees. Now the existing promoters and management can keep their control over the company. Yes or no? आपके outstanding number of shares कम हो जाएंगे, then it will be lesser number of shares available in the market right now, and now at the same time promoters का जो majority stake है that will increase. उनका जो पोर्शन लेट्स से उनका 20% था, मार्केट में शेयर्स कम हो गए तो उनका वो परसेंटेज में जो ऑनरशिप स्टेक है दैट विल इंक्रीज हियर. एंड दिस इज हाउ द मैनेजमेंट, नाउ समटाइम्स मैनेजमेंट क्या करता है, दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस ऑन द राइट टाइम बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यू कैन से देयर इज इंटरफेरेंस आल्सो, इंटरफेयर होते डिसीजन मेकिंग में, दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन ऑन टाइम. सो इन दैट केस मैनेजमेंट कैन डू वन थिंग कि इस वाली प्रॉब्लम को कम किया जाए. ओके, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम they can do they can plan for the buyback of shares here. Same point we have already discussed in the previous slide, promoters वाला point. यहाँ पे एक point important है कि promoters, I can understand उनका mindset क्या रहता है, they want to control the company, they want to keep more stake in their own hand. Now there is management, because of जितने मुलाजिमत of shares होगी, I told you that कि उतनी ज़्यादा problem होगी decisions making के अंदर. So that's why the management always want to keep the more control over the company, and that is the one way, that is the buyback of shares here. Now one more point I want to tell you, जितने अब आपके from the existing shareholders perspective, I mean after buyback of shares, let's say you are the shareholders, you want to stay with your company, I mean in my company you want to invest, and buyback done हो गया. Right now let's say ये पूरी क्लास फुल थी, उसमें से हाफ बच्चे बाहर चले गए, right? Now जो remaining students है, that is I mean you can say we are able to talk and something, so that is more interactive class है, ऐसा कुछ हो सकता है. Same with the company also. So shareholders are going to enjoy in the earning per share will increase. Yes or no? Shareholders is going to enjoy the more power, right? Shareholders is going to enjoy I mean you can say more let's say more stake in the assets of the company, जो उनके पास है उन्हीं की है remaining right now. So this is what the benefit with the existing shareholders also. Did you get my point? From the promoters का mindset क्या होता है, आपका management का क्या mindset, and third thing is your existing shareholders. Now it brings liquidity in the hands of the investors. I already told you that.
लिक्विडिटी इट मीन्स लेट्स से आप कोई कंपनी है जिनकी आपकी ट्रेडिंग कंपनी का वाइब्रेंट नहीं है मार्केट, लेट्स से नोबडी इज गोइंग टू बाय योर कंपनी शेयर्स, इन दैट केस बायबैक ऑफ शेयर्स आपका एक पॉइंट हो सकता है जहां पर it you are going to provide the liquidity to the investors. Those who really want to exit from your company, they can do through buyback of shares because you are paying immediately. So this is what the buyback of shares here. This is what the theory benefits of buyback. Company can use its surplus cash. It improves the return on capital. Retiring employees, management, and promoters, they want to control more over the company shares and all. And it liquidity in the end of the investors, your existing shareholders earning per share will increase, the return on capital will increase. So these are the things we have discussed till now. Is there any doubt up to this point? Okay, so please next slide. Limitations of buyback of shares, I think मुझे लग रहा है काफी टाइम है, आप लोग you can read it. Okay, so limitations वगैरह बहुत ही basic है. And in case if you don't have reserves and surpluses, then you are not able to implement plan of like buyback of shares again. And there is so there are a lot of limitations here. Now there is one more point I want to tell you here: sources of buyback of shares. Now please listen carefully here. I told you that from the reserves we are going to use the surpluses. We are going to use surpluses. Which kind of surpluses? Surplus आपको पता होगा, if you are going to earn large amount of the profit, then part you can say existing जो profit है उसमें से आप one part you are going to make the provisions, you are going to make the reserves, let's say for the dividend, provisions for the taxation, provision for the bad debt. There are, you all know that reserves. So and free reserves जहाँ पर आप dividend वगैरह उसमें से pay करते हो. So the thing is here, we all know that the sources of the buyback of share is the reserves, but what kind of reserves we are going to see here. अब रिजर्व्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स के अंदर आप लोग कह सकते हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. यू ऑल नो दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज बेसिकली if you are issuing your share at premium, then that premium you are going to transfer into what? Securities premium account. Let's say you are going to issue debentures in the market at premium. Again it will be transferred to what? To securities premium account. Again it is same with your preference share also. If you are going to issue preference share in the market at the premium, then that premium is going to transfer in the securities premium account here. और भी बहुत सारे फ्री रिजर्व्स में डिविडेंड रिजर्व्स वगैरह यहाँ पर काफी सारे हैं. यू विल सी देयर द लिस्ट. ओके, सो फ्री रिजर्व्स के अंदर now the second thing is the securities premium account. Free reserves के अंदर there is one more point I want to tell you here. If you can note down here, securities premium reserves, आपके जनरल रिजर्व्स भी आते हैं इसके अंदर. फ्री रिजर्व्स के अंदर यहाँ पर you can note down here general reserves, and apart from that dividend reserve, dividend reserves जो आपके फ्री होते हैं, dividend reserves, and securities premium account we already discussed. And बहुत सारे लिस्ट वगैरह है प्रीमियम रिजर्व वगैरह की, and then you will see it. Okay, now there is a securities premium account. Now one more thing I want to tell you here, the proceeds of the shares or any other securities, it must be clarified that sometimes क्या होता है ना, आप नए शेयर्स इशू करते हो मार्केट के अंदर, दैट प्रोसीड जो आप शेयर्स इशू करते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ फंड फ्रॉम दैट. ऑब्वियस है, व्हाई यू आर गोइंग टू इशू शेयर्स इन द मार्केट? Because you want to raise the capital from the market. Yes or no? You want to raise the capital, and that capital you are going to utilize for some kind of financing your existing projects, जो भी XYZ projects हैं, and then in future you are expecting that project is going to contribute in your earnings of the company. Same here. अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली जो बुक्स वगैरह में आप लोग रीड करोगे, then you will, एंड कंपनीज एक्ट 2013 और 2014 के अंदर कुछ वहां पर प्रोविजंस है रिलेटेड टू दी बायबैक ऑफ शेयर्स. देन यू विल फाइंड आउट कि अगर आप बायबैक कर रहे हो यहाँ पर शेयर्स का, देन यू आर नॉट एबल टू यूज द शेयर्स प्रोसीडिंग्स. शेयर्स की जो प्रोसीडिंग्स है, मतलब शेयर्स को आप इशू करके आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज वो यूज नहीं कर सकते.
right? If you are going to plan the funds by issuing preference share in the market, अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो आपकी सेल कर रहे हो, then you will get some kind of fund, and that fund you can utilize for the buyback of shares. You can plan. अब let's say आप bond issue करते हो, let's say you are going to issue bond in the market, and bond की जो आपकी जो fund आप raise कर रहे हो, then you can utilize for the buyback of shares. But आप same kind of securities आप use नहीं कर सकते for the buyback of share. That is the point here. You can read it. Excuse me. Please listen carefully here. Now, no buyback shall be made out of the proceeds of the earlier issue of the same kind of shares or same kind of securities. Okay? That's why I told you that अगर आप preference share issue कर रहे हो और debt issue कर रहे हो, then that proceeding you can use for the buyback of shares here. But same setup वाली यहाँ पर नहीं. Now, when company purchases its own shares out of the free reserves, require that sum equal to what? The nominal value of shares for purchase shall be transferred to the capital redemption reserve. One more point. आपको पता है reserves हम use करते हैं, but that reserve we are going to make the separate account, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account, and that reserve we are going to use for the buyback of shares here. एक कोई भी रिजर्व आप, whether you are going to use free reserves, whether you are going to use securities premium account, doesn't matter. Ultimately you need to transfer here, and then you are going to pay your shareholders. That is what the buyback of shares का provision है according to this section. Okay, now, and use only fully paid bonus shares वगैरह. ये भी bonus shares you will see in your coming classes. Bonus share I tell you that आप free of cost market में shares issue करते हो. Okay, and you are going to bear. आपको पता है bonus share? Okay, see, suppose you are the employee in my company, let's say. Okay, now right now this year we have earned good amount of the profit. Let's say I'm the company और आप लोग employees हैं, हम लोगों ने बहुत hard work करके बहुत अच्छे company ने earn profit करा है. Done. And right now company wants to give something in terms of bonus. Bonus हम लोग generally समझते हैं cash वगैरह, extra cash pay कर दिया आपको, half salary pay कर दी extra. So that is what the bonus. दिवाली बोनस, ईद, जो भी festivals वगैरह पे होते हैं bonus वगैरह, same kind of thing. But company क्या करते हैं? Instead of cash, they are going to pay shares to you. But you are getting at free of cost. Let's say market price of shares right now 1000 rupees. अब कंपनी को 5000 रुपीज बोनस पे करना आप सब लोगों को. सो 5 शेयर्स में हर पर्सन को 5 शेयर्स इशू कर दूंगा. दैट वी कॉल इट बोनस शेयर्स हियर. यस और नो? सेम काइंड ऑफ थिंग. सो ये एक वर्ड है यहाँ पर. यू विल सी इन डिटेल मैनर इन योर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस. ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Oh, are you able to see this? Okay. See this. Only fully paid equity shares and other specified securities. Only fully paid. Just listen. What is the point? आपने देखा होगा issue of shares के अंदर in last few classes के अंदर. Listen just. आपको पता है fully paid it means आपको final call तक जाना होता है. Then you are able to, you can say that is the paid up capital. फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी होती है, देन अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है यहाँ पर. डन. सो एट द लास्ट वो आपको क्या होता है? फुल्ली पेड शेयर्स होता है. आप बायबैक शेयर्स उन्हीं शेयर्स को कर सकते हो जो फुल्ली पेड होते हैं. ओके, बायबैक ऑफ शेयर दैट मींस फुल्ली पेड. ऑल्दो आजकल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कोई मतलब नहीं है. राइट नाउ इमीडिएटली एक साथ ही कंपनी आपसे फंड रेज कर लेती है. राइट. द पॉइंट इज वेरी सिंपल. जब आप एकेडमिक्स में या बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं, from the examination point of view, only fully paid equity share, that means, and other specified securities, it means the company can pay or purchase the buyback of shares
That is what यहाँ पे buyback of shares and मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर company cannot purchase its shares unless they are fully paid up. That's what we are talking about here. Done. और यहाँ पर एक सिंपल सी शेयर कैपिटल जो फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पर एक एंट्री देख लो आप लोग शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट है और टू यहाँ पर लिक्विडिटी और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड जो आप बैंक अकाउंट यहाँ पर करोगे देन इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट है क्योंकि कंपनी आपसे फुल पैसा रिसीव करे दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग हियर नाउ टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ये वी हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग इन योर प्रीवियस सेशंस you have seen just right now we are going to talk about the accounting procedures for the buyback of shares here so just listen यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं exactly there is no change it will remain the same that means buyback of shares first condition is कि share आपका fully paid होना चाहिए partly paid है then we can't do such kind of thing okay so first now the second slide please okay proceeds from the fresh issue of shares fresh issue of shares now issued at par bank account debit to the share and allotment account okay so यहाँ पर proceeds from the fresh issue of shares let's say आप buyback plan कर रहे हो कुछ shares issue करके and then you are going to use it for the buyback of shares that point of time you need to perform such kind of task and you need to pass such kind of journal entries here issued at par bank account debit to share application allotment account again it is related to the issuance of your share capital same वही entries कर रहे हैं यहाँ पर there is no change again यहाँ पर भी second task में भी and share application allotment account to relevant share capital ये relevant का मतलब है specifically preference share भी हो सकता है आपका equity share capital that's why now issued at premium again bank account with the total amount and to share application allotment account share application allotment to relevant share capital to securities premium account again same kind of entry we have seen in the previous sessions जहां पर इश्यू शेयर कैपिटल करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां पर हम क्रेडिट करते हैं डन इज देयर एनी चेंज यहां पर तो कोई चेंज नहीं है मुझे नहीं लगता सेम है बिल्कुल जो इश्यू कर रहे थे शेयर्स वगैरह के अंदर नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स ओके वी कैन डू सेल एसेट्स को सेल करके देन दैट प्रोसीडिंग्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स same you can see here bank account debit you are getting some kind of fund so that's why sale proceeds here now profit and loss account because loss on the sale now for relevant assets and investment account book value and profit and loss account on sale आपको पता है profit हम कैसे निकालते हैं book value it means the purchase value minus your depreciation जो each and every year आपका accumulate होता रहता है and then you will get your book value right so let's say 1 lakh rupees है 5 years down the line that value revealing as zero so आप इसको क्या कह सकते हो 20,000 each year their depreciation right so now but at the end of the 5 year let's say this salvage value of this machinery is 5,000 rupees आप मुझे बताओ book value zero है that means this 5,000 rupees is the profit for you did you get my point so same point here now so profit and loss account loss कब होगा जब आपकी book value is greater than your salvage value and same here now profit and loss profit वाला case when your salvage value is greater than your book value now so this is what the sale proceedings we are going to use here is there any doubt up to this point now next slide please okay issue of debentures ये भी कर सकते हो I told you that apart from the equity shares you can sell the existing assets and you can issue some kind of debentures also so debt वाले आप लोगों ने किया है या नहीं किया बताओ मुझे एक बार debt I think you have seen in your 12th class I think if I'm not wrong not till अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ ना बीकॉम की क्लासेस में debt मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको just see more or less we are going to more focus on the equity shares instead of the preference share also but debt के अंदर थोड़ा बहुत component है that we will study about that now the point is here
इश्यू ऑफ डेबेंचर्स एट पार करते हो, बैंक अकाउंट अगेन वो शेयर्स वाली जगह, और यहाँ पर डेबेंचर्स अकाउंट कर देते हो एट डिस्काउंट. यस, आप लोगों को पता है शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते राइट नाउ, दैट इज नॉट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी नल एंड वॉइड, कुछ नहीं होगा वहां पर. नाउ वी कैन इशू शेयर एट प्रीमियम और एट पार, बट यहाँ पर देखो डेबेंचर्स के अंदर डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी है. You can see now the point is, if you are going to issue the bank debt debentures in the market, then you are going to get some kind of fund here, amount received now here, and discount on issue of debentures and the to debentures account, that is the face value here. At premium वाले केस में हम क्रेडिट कर देंगे हमारा जो ये पॉइंट है प्रीमियम अकाउंट. yes or no? okay, is there any doubt up to this point? okay, now next slide please. Okay, say buyback of from the free reserves and security premium creation of the capital reserve redemption reserve account. Can you see that? I already discussed with you sources of the equity, buyback of shares. We have seen free reserves, we have seen securities premium account, and last में देखा था वहाँ we need to create one reserve, that is the capital redemption reserve account. yes or no? Now here there must be sufficient balance. First criteria जो हम देंगे यहाँ पे, let's say अगर मैं बात करूं, let's say free reserves हैं और let's say securities premium है. So first we are going to utilize this the free reserves, and then we are going to move on the second point, second preference, that is your securities premium account here. Securities premium account second में हम यहाँ पर. Now and then let's say there must be sufficient balance in free reserve account or securities premium account. That means we are going to give the top priority on this. After that, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, amount equal to the nominal value got back from the reserves and securities premium account share must be transferred to the capital redemption account. And this entry we are going to, यहाँ पर हम ये start करेंगे securities premium account debit, वहां से कम कर रहे हैं अमाउंट. नाउ सरप्लस अकाउंट वहां से कम होगा, then again your general reserve account कम होगा, then third is any other divisible profit account, वो भी कम होगा, and we are going to put into what, your capital redemption reserve account. From this reserve we are going to transfer to the shareholders account. yes or no? there is a common pool, कह सकते हो कि ये सारे reserves हैं, these are the sources, and we are going to put into one reserve that we call it capital redemption reserve account. And then we are going to pass the general entry की हम पे कर रहे हैं shareholders को. yes or no? done. यहाँ पर ये अकाउंट जो डेबिट कर रहे हैं, ये अमाउंट कम हो रहा है हमारा यहाँ पर. okay, and we are going to put into capital redemption reserve account here. done. shall I move? okay, next slide please. Regarding the amount payback in buyback of shares, a company can purchase its own shares at par or premium. yes or no? right. now we are going to pass the general entry जो पास कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं, we are doing that is related to the buyback. अभी तक हमने सेल्स प्रोसीडिंग रिजर्व वगैरह यूज कर रहे थे. right now we need to execute this plan. for that, see, when buyback is going to at par, then equity share capital account debit to equity shareholders account credit. that amount we are paying because they are getting it here. yes or no? now because ये liability side है ना, ठीक है. now here when buyback is at premium, say this, equity share capital account debit and your premium payable on the buyback account premium here, जो आपका अमाउंट आएगा to equity shareholders account, same you can see here. done. just the difference is what the equity, there is one is we are buyback at the par or second one is at the premium, so that's the difference, otherwise both are the same thing here. yes, excuse me, last batch, am I audible to you? आपको आवाज आ रही है मेरी? okay, when buyback is at discount, say equity share capital account face value and to shareholders account and capital redemption reserve account, that is the discount here जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर. so this is what, क्योंकि buyback तो discount पे हम कर सकते हैं, not on the it's not necessary.
वो सिर्फ इशू इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बायबैक कर सकते हैं डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट में पता कैसे चलेगा? जब फेस वैल्यू इज मोर देन योर मार्केट, so that point of time that we call it the discount. Okay, now what I told you that, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि फेस वैल्यू होगी वो कम ज्यादा होगी देन कंपेयर टू मार्केट वैल्यू. यस, दैट इज व्हाट योर डिस्काउंट हियर. नाउ shall I move on the next slide? Okay, there is account. Ab now we need to make the separate account for the buyback of shares. Okay, you know, जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है ना, so that point of time investment bankers they are going to open the separate account. उस अकाउंट के अंदर क्या करते हैं? they are going to get the application money on that, right? वो सेम हियर फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं. उसका बैंक अकाउंट का कोई भी नाम दे सकते हो. यहां पर यू कैन सी हियर बाय बैंक अकाउंट. और जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ओपन द बैंक अकाउंट. सो यहां पर यू आर पुटिंग मनी इन दैट, सो दैट्स व्हाई यहां पर हम डेबिट कर रहे हैं इसको. कैन यू सी दैट? जब आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे एंड टू बैंक अकाउंट, ये नॉर्मल बैंक अकाउंट है कंपनी का, and you are specifically you are transferring to what? To the specific bank account, buyback account here. Now payment to the equity shareholders account debit. Now to buyback account ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि यहां से अमाउंट कम हो रहा है. डन? यस और नो? एंड यू कैन सी ये लाइबिलिटी साइड है, तो यहां पर हम इंक्रीज कर रहे हैं. एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम पेबल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अब हम इसकी बात करते हैं. आपसे मैं न्यूमेरिकल में पार्ट में बात करता हूं एक बार. नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ बायबैक एक्सपेंसेस. अच्छा एक और बात, बायबैक है ना, आपको डेफर्ड एक्सपेंसेस हम मानते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू राइट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस, सो इसलिए यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं. So payment of the buyback account expenses to bank account here. Again उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हर साल हम क्या करते हैं? उसको ओवरकम करते रहते हैं. राइट ऑफ, जैसे गुडविल वगैरह राइट ऑफ नहीं करते, सेम केस यहाँ पर डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, जहां पर हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट हियर. डिड यू गेट द पॉइंट टिल नाउ? ओके, सो चल आई मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक. Okay, now please move. Okay, XYZ Limited, say this, XYZ Limited buy back 50,000 shares of rupees 10, and each at rupees 25 per share. That means we are buy back at premium. पता लग गया केस? यहाँ पर प्रीमियम पे बाय करें. फेस वैल्यू इज रुपीज 10 समथिंग और 25 रुपीज वी आर बाइंग एट राइट नाउ. लेट्स से now reserves of the companies are securities premium is 15 lakh rupees here. Now second thing is you can see a general reserve is 23 lakh rupees. Now the pass the general entries for the book of the company. Okay, can you click this photo in phone and then मैंने solution already इस पे चिपका रखा है next slide पे. You can see that. Just यहाँ पर please please click the photo. Okay, shall I move? Next slide. Yes, say this.
Okay, can you see that? First thing is we are planning to buy back of some shares at rupees 12,50,000 था ना वहां पर. Can you see the previous slide? कर सकते हैं एक बार previous one? See 50,000 multiply 25 rupees. कितने आ रहे हैं? 12,50,000. Next slide please. Say this 12,50,000 to the bank account. Done. Specific bank account है हमारे पास. Buy back बैंक अकाउंट हियर. नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करेंगे हम रुपीज 5 लाख. अगर आप देखोगे ना फेस वैल्यू कितनी है वहां पर 10 रुपीज मल्टीप्लाई विथ 50,000 शेयर. सो हमारे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिट इज 5 लाख. दैट मीन्स इतना अमाउंट कम हो रहा है हमारा लाइबिलिटी साइड से. जो ओनर्स कैपिटल है लाइबिलिटी साइड वहां पर दैट इज गोइंग टू रिड्यूस योर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यू कांट से कि इट इज 12,50,000 because 7 lakh जो remaining है that is the premium on that. Yes or no? So 5 lakh यहाँ पर मैं डेबिट कर रहा हूँ. You can see equity share capital account debit by 5 lakh. Now premium on buyback of share that is what I have written here. क्या है exactly? That is 7,50,000. How we have calculated this? 25 rupees. That is the premium amount at which we are buying the shares from the market. Now 25 rupees less हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 10 rupees here and multiply with 50,000 then you will get it your 7,50,000 here. Now after that you can see to the equity shareholders account ये आपका total आ जाएगा 12,50,000 here. Now securities premium account debit कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 lakh rupees and जो यहाँ पर आपका capital redemption reserve account है that is 5 lakh rupees here. आप लोग स्लाइड्स के अंदर देखोगे देन यू विल गेट इट. हमने ये डिस्कस किया था अभी जहां पर जनरल एंट्रीज पास करे. नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय 7,50,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर इज 7,50,000 हियर. इतना अमाउंट हम वहां से कम कर रहे हैं 7,50,000 हियर. और आप एक बार मुझे हाँ वैसे एक बार पीछे करना प्लीज. हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 15 लाख है और ये 23 लाख है. नेक्स्ट स्लाइड करना. हाँ 5 लाख और 750 क्योंकि अभी तक हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम उस सेकंड वाले रिजर्व की हमें जरूरत ही नहीं है. आप देखोगे ना वहां पर 15 लाख समथिंग है और ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 12,50,000 जस्ट. सो दैट मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,50,000 एंड जो प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर क्योंकि वी आर पेइंग फ्रॉम द रिजर्व्स एंड दैट रिजर्व इज हु. कौन सा रिजर्व है यहाँ पर which reserves? जो हमारा I mean securities premium account here and we have already seen that कि free reserves securities premium and then वहाँ पर capital redemption reserve account की बात कर रहे थे. Now equity shareholders account debit 12,50,000 and now we are transferring into the bank account of the equity shareholders. Say this. बैंक इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है कि कितना आप प्रीमियम दैट इज गुड थिंग बट हमें यहाँ पर कुछ शो करने की जरूरत नहीं है कि वी आर पेइंग दैट. कंपनी अपने लिए सारा कुछ करती है. यहाँ पर 7,50,000 वी आर रिड्यूसिंग फ्रॉम दिस अमाउंट एंड ऑल. बहुत सिंपल था. इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? इज इट विजिबल? ओके I try after finish this class I will upload we will try to upload these PPTs on your YouTube video. Okay, now please next slide. Okay, see the last question. Excuse me. Following information is available from the books of ABC Limited. 1,20,000 equity shares of rupees 10 each. That means equity share capital in book value you can say or in shareholders account that was 12 lakh rupees. Now and securities premium account you can see 70,000 here. Okay, now general reserves is 3,50,000. The company decides to buy back 25% of equity capital at rupees 12 per share. 25%. How much?
How many shares we are going to buy? How many shares? 30,000. Yes. Okay, just click the photo and then I will move on the next slide. Shall I move? This next slide. Okay, again same kind of transactions जो हम बात कर रहे थे, same kind of entries we are passing here. So buy bank account debit 3,60,000, आपको पता है 1,20,000 और 25% of shares. This is what I'm talking about. 1,20,000 of 25%. You did na 30,000 shares. 30,000 multiply with what? 12 rupees. That means 12 rupees now. And now this is the total amount is 3,60,000. Securities premium account again 10,000. General reserves account 2,90,000. जो हम एंट्री वहां पे पास कर रहे थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखो 10,000 है एंड जनरल रिजर्व्स के अंदर यहाँ पर 2,90,000 है. लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था. टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट 3 लाख रुपीज है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज 3 लाख. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 60,000 रुपीज हम यहाँ पर अगेन वही सेम एंट्री बायबैक अकाउंट में करेंगे और प्रीमियम वगैरह, then you will get it around 60,000 here. Okay, so please, is there any doubt? Let me know. Do some kind of illustrations based on the buyback of shares, and from my side buyback of shares is completed, and we will start the new topic in the next class. Okay, so do some illustrations and some practical or questions based on the buyback of shares. Okay, and it was the part of your 12th class buyback of share. No, now, so just follow UG based books. You can follow your SLM right now and you can read it and then do some kind of questions also अगर वहाँ पे solve questions वगैरह है कुछ, right? Or you can find out some on the Google पे आप करोगे, then you will get the lot of PDFs that is based on the buyback of shares. You will get the number of questions and please do practice for that. Okay, so thank you so much and take care. Just a second. Let me. सर डन हो गया, बंद कर दो.